जुबानें, जुड़ती जुबानें, लैंग्वेज कनेक्शन। इस सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दरअसल अभी हमारी बातचीत का जो विषय है यह समन्वय आईएलसी भारतीय भाषा महोत्सव, जो कि भारतीय भाषाओं का को समर्पित डिजिटल फेस्टिवल है दिल्ली का, उसका इस बार का मुख्य थीम था और हम उसी पर यहाँ पर आगे की बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हिंदी के एक बहुत प्यारे शायर और कवि हुए शमशेर बहादुर से उन्होंने लिखा था, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। हिंदुस्तान में कितने दुआब हैं जिनमें हम और आप रिफ्लेक्ट होते हैं। इस पर बात बहुत हुई है, जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। आज हमारे बीच जुड़ती जुबानें विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मुशर्रफ अली फारूकी साहब, चेतन का निर्मल कांति भट्टाचार्य जी और दामोदर मौजू साहब। दामोदर मौजू साहब कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कॉलमिस्ट हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं और अपने उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी पा चुके हैं। इनके उपन्यास का नाम है कार्मेलिन और यह कई भाषाओं में 12 भाषाओं में शायद ये अनुदित हो चुका है। कथा अवार्ड भी इनको 1998 में क्रिएटिव फिक्शन के लिए मिल चुका है और बहुत सम्मानित नाम है कोंकणी साहित्य के हमारे बीच आए हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे सत्र के लिए। निर्मल कांति भट्टाचार्य जी अभी नियोगी बुक्स के डायरेक्टर हैं और इन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी के बीच अनुवाद के जरिए बहुत बड़ा काम किया हुआ है। दोनों भाषाओं के साहित्य को एक दूसरे से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया हुआ है और कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हैं। इनके काम के बारे में हम लोग इनसे बातचीत के दौरान और ज्यादा जानेंगे। मुशर्रफ अली फारूकी साहब पाकिस्तान से हैं और आप उर्दू और अंग्रेजी के बीच एक मजबूत पुल का काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अंग्रेजी के उम्दा उपन्यासकार हैं और बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं और बच्चों के लिए किताबें छाप भी रहे हैं। किताब नाम से उन्होंने एक नया प्रकाशन शुरू किया हुआ है और उसमें सबसे खास बात यह है जो इस सत्र में बताने लायक मैं जरूरी समझता हूँ, वह यह कि अंग्रेजी और उर्दू की किताबों का प्रकाशन ये शुरू कर चुके हैं और सिंधी और पंजाबी में भी किताबें छापना चाहते हैं, वो भी बच्चों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस सत्र में हमारे बीच इनके होने की अहमियत क्या है। तो मैं सबसे पहले इन्हीं से बातचीत शुरू करता हूँ। नमस्ते फारूकी साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ भाषाएं दुनिया में इस समय इस तरह से छाई हुई है कि जिनका हिस्सा होना बहुत जरूरी हो गया है और वह स्टेटस का भी हिस्सा बन गया है कि हम उस भाषा में हैं। ऐसे तौर पे पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, इनकी क्या स्थिति है और जब उनके लिए आप काम शुरू कर रहे हो, खासतौर पर नौजवान पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या सोचकर आपने यह काम शुरू किया और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? शुक्रिया। एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं पब्लिशर भी हूँ और मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री को जानता हूँ। वेस्ट में और मैं काम कर चुका हूँ उसमें और पाकिस्तान में मैंने शुरू किया। हिंदुस्तान में तकरीबन 8 पब्लिशर से मेरी किताबें छप चुकी हैं, तो उन हिंदुस्तानी पब्लिशिंग के बारे में भी अच्छी तरह अंदाजा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है पब्लिशिंग सेक्टर में। अभी तक हम बात करते हैं अंग्रेजी ज़ुबान की और उससे जो एक लीड स्टेटस आपको मिलता है एज अ राइटर इन द सोसाइटी। इफ यू आर राइटिंग द लैंग्वेज डायरेक्टली यू गेट अ स्टेटस डायरेक्टली एंड इफ यू हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू दैट लैंग्वेज देन यू नो इट क्रिएट्स another degree of status for you in your language and then in English.
But if you look at the industrial the West, where it is a proper industry much bigger than what we have in India, it is in decline. It is in severe decline. And I know of writers. There is a case of an Australian writer who has a market in India, but no market in Australia itself. So he is making a living by selling his books in India, published. So these are the changing realities, and the kind of status that people writing English had because of that, the strength of that industry may not be there in the coming years. But that is a particular language at a particular time, publishing as it is. हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो हमको बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास कोई ना कोई हर आदमी बाइलिंगुअल है, किसी ने एक जुबान जानता है, दूसरी जुबान से भी उसको वाकिफ है। तो हिंदुस्तान के अंदर आप अगर हिंदी को ब्रिज लैंग्वेज बना लीजिए, इस तरह इंग्लिश ब्रिज लैंग्वेज है, फॉर एक्सेस टू अदर लैंग्वेजेस, there's such a wide language bank in India. There's such expertise available in all the languages. Sitting in Delhi, sitting in Goa, sitting in Calcutta, you can have access to that resource and translate literature between languages, create links between writers writing in different languages. Yes, there is a very nasty history of language politics. There are always conflicts within language groups. I know of Urdu, where Urdu writers have always undermined. The Muslim Urdu writers have always undermined Hindu writers writing in Urdu. कि भाई आपको तो उस तरह की नहीं आती उर्दू जिस तरह की हमको आती है. तो ये एक तासुब है, this prejudice exists and it has to be acknowledged, but then we have to move forward from that. ठीक है, ये हुआ, ये गलत चीज हुई, let's move forward. Because if you remain stuck at that point कि अरे भाई वो तो आपने ये किया था, आपने ये किया था, then nothing will happen. And as a society, we will not be able to progress. So despite this ugly history of linguistic politics, which is related to our ethnic identities, unfortunately, in this region, we have to look at the future. And the future will only emerge if we dispassionately look at, just look at it as a business model, forget about anything else. You will have a much wider readership in India if a company work is translated into the 20 or 25 or 32 languages which are spoken in India. If it's, if it comes to Pakistan, Pashto and, Baluchi and Sindhi, which have another readership there. So we have to look at this whole region, at the economic possibilities, which ultimately makes you elite. So people who are in the decision-making role, they have to, consider these things beyond ethnic conflicts, beyond regional conflicts, beyond the immediate political realities, and that will, change the future of the regional languages, people are working in them, and it will create a new elite, a new reward, with it for those working. निर्मल जी, बांग्ला से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से बांग्ला में और द्वार मूर्ति का साहित्य आपने जो अनुवाद किया बांग्ला में वो कन्नड़ से सीधे किया या अंग्रेजी से किया, मैं इस बारे में बहुत खैर नहीं हूँ, लेकिन एक आपके अनुवाद के काम पर बात करने से पहले इस बारे में बात करना मैं जरूरी समझता हूँ कि मुझे हमेशा लगता है कि भाषा से जब किसी भी भाषा से जब राजनीति जुड़ती है तो हम धंधे बनाती है, बाजार और व्यापार जुड़ता है तो उसके लिए जगह बनाते हैं, और जब साहित्य जुड़ता है, संगीत जुड़ता है तो वो रिश्ते बनाते हैं। बांग्ला बाजार, राजनीति और साहित्य और संगीत सबसे उसका बड़ा अच्छा और बुरा हर तरह का संबंध रहा है, मतलब भाषा के आधार पर बंगाल सब भाषा की लड़ाई मैथिली और बांग्ला के बीच भी बड़ी रही है, गति को लेकर के हमारी पूरी को हमारे उड़िया से भी कुछ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बांग्ला भाषा के साहित्यकार पूरी हिंदी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा दुलारे रहे हैं। मतलब हिंदी के एक आम पाठक से पूछा जाए कि शरद चंद्र किस भाषा के लेखक हैं तो 100 में से 90 शायद कहेंगे हिंदी के लेखक। उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं कि ये बांग्ला के लेखक। महाश्वेता देवी की स्थिति लगभग उसी तरह की होती जा रही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर बांग्ला लेखक को नोबेल पुरस्कार मिला इस
तरह से जाने गए, तो वो बांग्ला के जाने जाते हैं, लेकिन उनको घर घर में पढ़ने की परंपरा सिंधी पट्टी में है, पढ़े जाते हैं, नहीं आते। तो ऐसे में वहाँ पर अंग्रेजी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज रहा, हमेशा से रहा है अंग्रेजी पढ़ना, वहाँ जरूरत और शौक दोनों लोग वहाँ के लोगों के लिए रहा। लेकिन बांग्ला के लिए शौक और जरूरत भी कभी कम नहीं हुई। बांग्ला के लेखकों का क्रेज किसी तरह से भी कम नहीं हुआ वहाँ के लोगों के। अभी वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ के नौजवान अभी के साहित्यकारों को किस तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, और बांग्ला दूसरी भाषाओं के साहित्यकारों और लेखकों को किस तरह से स्वीकारती है और उसके लिए वहाँ किस तरह से जगह बनती है, इसके बारे में आप। Yeah, I fully agree with both you and Musharraf that when language is, is a tool for politics, then it brings a lot of separatist feelings. But when language is connected with business, as you said, and he said when language is connected with culture, literature, then Judti, Zubanein, both have. So far as Bangla is concerned, yes, Bengal always valorizes the writers. In a matter of manner of speaking, we can say that Bengalis respect their writers to a fault almost. Why to a fault? Because it is often said that in Bengal a scientist or a doctor or a businessman is not worshipped or valorized to that extent to which a writer or a musician or a painter is respected. So that has led to maybe some kind of economic and other depression in Bengal. But yes, writers are stars in Bengal. And almost like a film star, when a big writer comes to a book fair, he is mocked around like a still today. That is so. But at the same time, so far as you talked about the reception of Bengali literature in other languages, so far as the reception of Bengali literature in other languages is concerned, yes, that is a place where Bengal had an advantage, because a lot of Bengali fiction and Bengali poetry has been translated into most of the Indian languages. And not only Sharat Chandra was misconstrued as a Bengali writer in the southern, particularly in Kannada and Telugu and Tamil, but sometimes we find Devdas, Vipradas, these are the household names amongst people. But there is a complaint that this was sort of a one-way traffic, that Bengal has not really translated or received an equal number of books or equal amount of literature from other Indian languages. Now I would concede that yes, Bengali has a very strong translation culture, but most of the translations are from French, German, Russian, the Spanish and others, but not too many translations from Indian languages. A situation which is now being rectified, and now many private publishers also. Of course, I'm not talking about National Book Trust or Sahitya Academy, because these are autonomous organizations of the Government of India, and it is one of their charters to translate from one language into another language. Many of you know that National Book Trust Judti जुबान पे एक सीरीज ही है, इसको बोलते हैं आदान प्रदान। आदान प्रदान सीरीज में नेशनल बुक ट्रस्ट में एक किताब को रिमेनिंग 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन होते हैं. This is why Damodar Bhai's book was also translated, and many great writers have been translated. There is a huge series. लेकिन जो रिवर्स ट्रांसलेशन बांग्ला में कम हुआ from Indian languages, अभी इसको थोड़ा rectification हुआ है. And so far as you mentioned my translations, I think yesterday in a session both Mr. Merutra and Antara said that they translate from a language which they do not know. Now I am also practicing this. Yes, I have translated Ivar Anantamurthy's short story collection into Bengali. I have translated Vishwas Patil's Judti into Bengali. Vishwas Patil's book is in Marathi. I translated it for Sahitya Academy. Anantamurthy's book is in Kannada. I translated it for a private publisher. But I had an advantage. Both are living authors, number one. Number two, both the volumes are available both in English and Hindi. So I consulted the Hindi text, I consulted the English text, and wherever doubts I marked it. Then I sat with Vishwas Patil a number of times. I sat with Professor Anantamurthy a number of times and clarified the doubt. Now this is not I didn't work with a mission or something, but that feeling was there
that these are great writers whose books should come into Bengali. And Bengal's book has been done enormously into both Marathi and Kannada. Many Bengali books are available in Marathi and Kannada. So I thought, okay, here there is a gap, and these are the authors whom I closely know, and I can perhaps fill up the gaps. That is how I work. And as far as, sort of some kind of reduction in the number of readership in Bengali, which you mentioned, here Bengal and I think the rest of the country is on an equal footing because of the increase of the English language schools and English medium craze and all these things. I think a generation is coming up who, in all Indian languages, this dearth is there. A generation is coming up who do not read their mother tongue books in their mother tongue as much as we used to, or generation after us also used to. So that depression is there in Bengal also today. Still today, Bengal valorizes literary culture. Still today, some of the popular writers in Bengal are treated as stars. All this is true. But at the same time, I think the number of readership is being maintained because of the increasing literacy. But at the same time, a sizable number of upper middle class children are not reading enough Bengali. That's the limitation. दामोदर जी, आप हुगली के बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं और आपका उपन्यास 12 भाषाओं में अनुदित हो चुका है। बतौर लेखक भारतीय भाषाओं में से एक भाषा के लेखक हैं और अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। एक लेखक होने के नाते आप इस चीज़ को किस तरह से अनुभव करते हैं कि जब आपकी कोई रचना दूसरी भाषाओं में अनुदित होती है और उस भाषा के पाठक समाज से आपका एक संबंध होता है, वो कितना दो तरफा होता है वह संपर्क, और उसमें आप उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? शुक्रिया नितिन जी। First of all, you should remember, Goa is very small, the smallest state of this country. We have a population of 1.5 million, of which only half of it is the real Goan population. The other is who have come from outside. So you prefer to call them outsiders, but it's not a good term. But then they do not speak Konkani or read Konkani. Now we have a very limited readership. When my novel was published first, it was, I think the first print was of 1,100 words. It took many years to sell it. It was written in early 80s, published in early 80s. I got an award in 1983. But then when it was translated into 12 languages, the English version itself is in its 5th print, and one print is of nearly about 2,000 books outside by size that we got published. Which means the text that I have written in Konkani, which has a Konkani content, I will say, which has reached out to thousands of people across the country. So in those terms, I would say the translations help the language to reach out to a wider readership. But though they read it as a novel, it is the Konkani novel that they read, and they always have it in mind, this is about Goa, this is about Konkani. So in a way, I think translations help us to reach out to a wider readership. My own experience is, yes, translations do help. We have, by the way, we have translated many Bangla books into Konkani. We have many Kannada books in Konkani, including Marathi Pandege by Shivaram Karant or Samskar by Arundhati and many more. So we have Hindi writers, Bangla writers, Mahashweta Devi is available in Konkani. So the translations is certainly helping us, and translations from other languages to Konkani helps us to know where we stand, and accordingly it helps us to raise our bar. That is very important, I think, the very important function that translation plays in literary scenario. And I am actually happy that though my book alone has gone into 12 languages, I wish we have many more writers of a good caliber in writing in Konkani. Unfortunately, they are not well translated. We have another lacuna. We don't have good translators who
People, we have good people, we have people who know good English, we have people who know good Hindi, but those who know good Hindi, they do not know good Konkani. Those who know good English, they don't have mastery over Konkani. So this is the problem we face. So as a result of which, the translations are not happening. We have Kundali Naik, we have Mahabeshwar Sai, who are excellent writers. But unfortunately, they are not getting translated. Now, Kundali Naik is a playwright. I would consider him one of the topmost national playwright of that stature. But unfortunately, his plays are staged in Konkani, not in other languages. So how would people know about it? So I think translations help us. I can say I am only an example, representative example, but this should happen to the others also. कोंकणी में दूसरी भारतीय भाषाओं से अनुवाद की क्या स्थिति है और जो कर्नाटक में कोंकणी में साहित्य उपलब्ध है वहाँ तो कोंकणी स्क्रिप्ट के तौर पर साहित्य होती भी नहीं है, लेकिन ओरल लिटरेचर होने का काफी अच्छा है। तो उससे किस तरह का संबंध है गोवा की कोंकणी? Konkani community lives in diaspora because of various historical reasons. Originally from this region, now Goa has a limited borders because there are the political borders. Konkani has wider borders because it has up to Karwar, Subay, Halayar, they are all Konkani speaking areas. This side we go to Nagari, it is Konkani speaking. Unfortunately, because of the political borders that Goa has now, we are divided. So the people in diaspora during the say 300 or 400 years back, when the Konkani community shifted to Karnataka, they adopted the language of the soil and also adopted the script of the soil to their language. As a result, for last more than 300 years, Konkani is written in Kannada script by the people, Konkani people in Mangalore and other coastal regions of Karnataka. Similarly, it is in Kochi. To Kochi they went. So they settled in Kochi, they took their language with them, learned Malayalam language, and then adopted Malayalam script to Konkani. Of course, last one decade they have switched over to Devanagari because they find it difficult to reach out to other communities. When guided by scripts, then you cannot, one leadership cannot read the other. Those we are Konkanis. Now I write in Devanagari script, but I cannot read what is written in Kannada unless it is transcribed. So it's available in transcription, then only I can read. Fortunately, the process is on. So not to a great extent, but then still that helps us to know. And now I have read BJP Saldana, who writes as Khara. I mean, he is no more, but he wrote as Khara. And it's wonderful historical novels of during the period novels of Tipu Sultan and the Shah, when the Catholics were subjected to different problems. So this is how we keep connected because of language. As you said also, the oral literature is there, which is common between Goa and Karnataka, also Goa and Kerala. So that keeps the people connected. So we have a body, All India Konkani Sahitya Parishad, which holds Binani conferences, where people come together, discuss their problems. But we have yet to solve the one problem, which is the script problem, which keeps us divided. In Goa itself, we written in Roman script, also in Devanagari. But there is no question that language is one. But then that divides. As a result, it reflects on our leadership also. फारूकी साहब, आप खुद ओरिजिनली बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन आप पुरानी चीज़ों का आपने उर्दू से अंग्रेजी में से अनुवाद कर रहा एक मिशन की तरह से आप इसका चल रहे हैं, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? और उर्दू की पुरानी चीज़ें हैं, जो अच्छा लेखन है, पुराना लेखन जिस पर की नई पीढ़ी को भी लालच है, हाँ ये चीज़ हमारी भाषा में लिखी गई, लेकिन यह भी है कि वो सिर्फ नाम जानते हैं, सुना है, पढ़ा नहीं। उन किताबों का रिवाइवल कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपने इतनी मेरी तारीफ कर दी, मैं सोच रहा हूँ मैं ट्रांसलेशन करता क्यों हूँ, अपनी चीज़ लिखता करूँ। देखिए, ये ट्रांसलेशन एक तरह का वो है, क्रेज होता है, और अपना भी लिख रहा होता है ना, तो ऐसी अच्छी चीज़ पढ़ने में सोचता है यार इसका ट्रांसलेशन अगर मैं करूँ तो वक्त निकाल के तो बड़ा होता है।
तो वो सब है। लेकिन देखिए अगर फॉर वेरी सेल्फिश रीजंस, जब मैंने करना शुरू किया दास्तान भी हमजा का तर्जुमा, तो लोगों के फोन आए कि मैं अच्छा कर रहे हो, बहुत दोबारा को कहाँ से ग्रांट मिली? मैंने कहा ग्रांट तो कहीं से नहीं मिली। तो कहा कि फिर क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई कर इसलिए रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मुझे करने में उसको आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट थिंग। तो कहा कि अच्छा फिर छापे को कौन? मैंने कहा अभी तो नहीं पता है, जब खत्म होगा तो कोई छपने की बात होगी, खैर और छपा सब कुछ होगी। तो उससे नहीं रुकना चाहिए कि आप किस चीज़ को कर रहे हैं। और फॉर वेरी सेल्फिश रीजंस जैसे एज अ राइटर आई लर्न अ लॉट about narrative and narrative craft by visiting the classics, क्योंकि वो तो classics है ना for a reason। उनके जो narrative flaws हैं, techniques हैं जिसमें इस्तेमाल हुई हैं, उनके साथ आप अपना वक्त गुजारते हैं तो आप उसको सीखते हैं। So I think I'm a much better writer because of those translations. I may not have been able to write to the level that I think I've been able to write by virtue of translating those classics. तो मैं पूरा हमें होकर से संकेत मिल चुका है, फिर भी निर्मल जी आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि पूरे भारत को और दुनिया के और तमाम कम्युनिटीज़ को एक दूसरे से भाषाएँ अनुवाद के जरिए ज़्यादा बेहतर से जोड़ती हैं, साहित्य के जो भी रचा गया है ये में जो कुछ लिखा गया है। आप चूँकि प्रकाशक भी प्रकाशन संस्थानों से जुड़े रहे थे और पूर्व भूमिका में अभी भी जुड़े हुए हैं, अनुवादक भी बहुत अच्छे हैं। आप भारतीय भाषाओं का परिचय किसको देना है? बहुत डिफिकल्ट टू रिप्लाई, कठिन प्रश्न। भारतीय भाषा का भविष्य एज ए सेड अर्लियर दैट I'm not sure where we are going, and in a manner of speaking, though in some of the sessions here we have some of my colleagues and my friends have asserted that English is an Indian language now and English should no longer be treated as a foreign language or something. All this is fine, sounds also very good, but the fact remains that this all-pervading influence of English and the terrible explosion of the entertainment media, a kind of electronic invasion of our bedrooms, and because of this we get into larger perspectives. We will have to talk about globalization. We will have to talk about Vishaya mein kya ho raha hai, and there the connection between language and culture is very important. The way in which we are importing culture from abroad, from overseas, and the way in which it is changing the mindset of our younger generations. And I have been repeatedly sounding this alarm bell to such an extent that I have often been even described as a prophet of doom. I don't mind. I don't mind because we should not talk about ourselves. We are, in our generation, my age group, even younger than me, up to 50, up to 40 age group, of course we have this tradition and sanskar हमारा पास है. We love literature, we love our language. Tilatoma yesterday talked about Rabindra Sangeet. She belongs to Assam, but she sings Rabindra Sangeet. Mitra for Karnataka. But it is not a question of us, it's a question of the teenagers today. And 100% I look around, I live in Delhi, I work in Delhi, we are all multilingual creatures. Professor Ivar Anantamurthy used to say that we have a front yard of language and we have a backyard of language. So my mother tongue is Bengali, I speak Bengali at home. In my workplace or for intellectual discourse, I adopt English, whereas I manage my day-to-day affair in the market and shops in Hindi. So I'm trilingual, and not only me, it is not a unique feature for me. This is the reality of an Indian today, particularly after the horizontal mobility of people has increased, and people are moving away from their hometowns and home places to other regions of the country and abroad also. But when I look around in Delhi, I find that the youngsters are taking to Harry Potter and Bella, despite the fact that after all, Bella has grown up and Harry Potter is almost married now. But they are reading those things with so much of a zeal, rather than my Sukumar Rai
or Satriit Rai or Upendra Rai Chaudhary of Bengal. So that is, I think it's a parental failure. It's a failure in the teaching profession also. That love for mother tongue and love for the literature written in mother tongue is not being imbibed in an early stage. So about the future of languages in India, I'm qualified to speak, because if I speak, that may not sound very good. आप में से अगर कोई सवाल करना चाहे हमारे पैनलिस्ट